Adipurusham Tamaham Bhajami Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Enam Kanvandam Maravindanalayatapsham Bhagavatam Samasitam Buddhasundaram Kandar Bhagom Vidamaniya Vishesha Shobha Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Angani Yasa Sakalem Priya Priti Manti Vasyanti Panti Kayanti Chiram Naganti Ananda Chinmaya Sadhu Jala Vigrahasya Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Govindam Adipurusham Tamaham
Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai 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 Prabhupada. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma Vandho Mui Savadana Mate Vandho Mui Savadana Mate Jahar Prasade Bhai E Bhavatariya Jai Jahar Prasade Bhai E Bhavatariya Jai Krishna Prapti Hayaya Haite Krishna Prapti Hayaya Haite Guru Mukha Padma Vakya Chitete Kariya Ekyam
गुरुमुख पद्मा वाक्य चिते ते करिया क्या आरना करिया मने आशा आरना करिया मने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति प्रसादे पुरे सर्व आशा ये प्रसादे पुरे सर्व आशा चक्षुदान दिलये जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलये जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जायते अविद्या विनाशयन्ते अन्ते प्रेम भक्ति जायते अविद्या विनाशयन्ते प्रेम भक्ति जायते अविद्या विनाशयन्ते वेद गाय जार चरित वेद गाय जार चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकना लोकरा जीवना लोकना लोकरा जीवना श्रील प्रभुपाद पतित पावना प्रभु करो दया देह मोरे पद छया प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया ये आदि शुक्र भुवाना ये आदि शुक्र भुवाना
प्रभुपाद पतित पावना श्रील प्रभुपाद पतित पावना जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद श्री प्रभुपाद की जय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Tathai tathai bajar khol dana dana tahi jajar roll preme dala dala sonarange charanani purabaje Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol बोलिए बोलिए हरे हरे उदिला रुणा पुरबागे द्विजमणि गौरामिन जागे गे भक्त समूह लैया साथे गेला नगर ब्राजे Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा मदन मोहन राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। श्री प्रभुपाद की जय विश्वपाद स्वर्गाचार्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। विश्वपाद स्वर्गाचार्य डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री नवदीप मायापुर धाम की श्री जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई यमुना माई की विंध्य देवी तुलसी महारानी की कार्तिक मास महामहोत्सव के श्री यशोदा दामोदर के श्री राधा दामोदर के निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि बोल। ऑल ग्लोस टू समबडी डिवोटीज हरे कृष्णा, ऑल ग्लोस टू समबडी डिवोटीज हरे कृष्णा, ऑल ग्लोस टू समबडी डिवोटीज हरे कृष्णा, ऑल ग्लोस टू श्री गुरु एंड गौरांग श्री प्रभुपाद महाराज के हरे कृष्णा। तो अभी दामोदर अष्टक का पाठ होगा, तो आप सबको दामोदर अष्टक का एक पेपर दिया जाएगा, वो पाठ कीजिए और तत्पश्चात सब आरती धीरे धीरे करके एक एक करके दिखाइए। हरे कृष्णा। श्री दामोदर अष्टक की श्री दामोदर अष्टक की
नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमः नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदावियोलुखलाब्धवमाना परामिष्टमत्यन्तो तो दुते गोप्या यशो यशोदावियोलुखलाब्धवमाना परामिष्टमत्यन्तो तो दुते गोप्या यशो नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमः रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्ममिजन्तं कराम्बुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं रुदन्तं रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्ममिजन्तं कराम्बुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाककण्ठ स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिबदामो मुहुश्वासकम्पातिरेखाककण्ठ स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिपदाले व्रजमानं नमामि इति दीक्षलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तमिति इति दीक्षलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तद्येषितग्नेषु भक्तिजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सताविति वन्दे तद् तद्येषितग्नेषु भक्तिजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सताविति वन्दे तद् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं
वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिं वा न चाने विनयहं वर्षदपिह वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिं वा न चाने विनय वर्षदपिह वरम देव इदं ते वपुरनाथ गोपाल बाला सदा मे मनस्य विरस्तं किमने इदं ते इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्य विरस्तं किमने इदं ते नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरम् इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीले प्रीतं कुन्तले स्निग्धरक्तस्य गोप्या इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीले प्रीतं कुन्तले स्निग्धरक्तस्य गोप्या मुहुश्चुम्बितां बिम्बरक्तधरां मे मनसा विरस्तामलं लक्षलाभे मुहुश्चुम्बि मुहुश्चुम्बितां बिम्बरक्तधरां मे मनसा विरस्तामलं लक्षलाभे हे मुहुश्चुम्बि नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरम् नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुख जालाब्धिमग्न नमो नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभु दुख जालब्धिमग्न कृपा दृष्टि वृष्टि अति दिनं बतानु ग्रहणिश मामज्ञमेद्यक्षि दृश्ये कृपा दृष्टि कृपा दृष्टि वृष्टि अति दिनं बतानु ग्रहणेश मामज्ञमेद्यक्षि दृश्ये ग्रहणेश मामज्ञ नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामि कुबेर आत्मजो बद्धमूर्तैव यद्वा
तया मोचितो भक्ति भाजो कीर्तो च कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तैव यद्व्य त्वया मोचितो भक्ति भाजो कीर्तो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह तथा न मोक्षे ग्रहो मेस्ति तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमस्तेस्तु धाम्ने स्वरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायार्थ विश्वासदाम्ने नमस्तेस्तु नमस्तेस्तु दाम्ने सुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायार्थ विश्वासदाम्ने नमस्तेस्तु नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नमो नंत लीलाय देवाय तुभ्यं नमो नंत लीलाय देवाय तुभ्यं नमो नंत नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदा वियोलुखलब्धवमानं परामिष्टम् अत्यन्तो तो दूते गोप्या यशोदा जय राधा दामोदर राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाय जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय निताय गौर सुंदर निताय गौर सुंदर जय निताय गौर सुंदर निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव
श्री दामोदर अष्टक के। अभी दामोदर अष्टक का अनुवाद का कार्तिक के महीने में मनुष्य को भगवान दामोदर की उपासना करनी चाहिए और प्रतिदिन दामोदर अष्टक का पाठ करना चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। मैं उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के सामने नमन करता हूँ, जिनके मकराकृत कुंडल आगे पीछे हिल रहे हैं, जो गोकुल धाम में अपना दिव्य प्रकाश फैला रहे हैं, जो माता जसोदा के दही मथने के बर्तन के फूट जाने से डरे हुए हैं, जो माता के डरवश भाग रहे थे परंतु जिन्हें माता जसोदा ने पकड़ ही लिया है। माता से डरने का कारण यह था कि दही मथने का बर्तन छीके से गिरकर फूट गया था। ऐसे दामोदर भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। माता जसोदा के हाथों में हिलती छड़ी देखकर डरे हुए, जो अपने कर कमलों से अपने नेत्रों को बारंबार मल रहे हैं, शंख वलय की भांति जिनके कंठ की मोतियों की माला सुशोभित है, और रोने तथा जल्दी जल्दी सांस लेने के कारण जो नीचे ऊपर उठ रही है, मैं उन भगवान दामोदर कृष्ण जिनके पेट के चारों ओर रस्सी बंधी है और जो माता जसोदा के शुद्ध प्रेममयी भक्ति से बंध गए हैं, उनके सामने विनम्र प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार की बाल लीलाओं को करते हुए वे गोकुल वासियों को आनंद के सागर में निमज्जित कर देते हैं और इस प्रकार खोखले दार्शनिकों व ज्ञान मार्गियों की आंखें खोल रहे हैं कि वे सच्चे और प्रेमी भक्तों से ही जीते जा सकते हैं। मैं सादर बारंबार दामोदर भगवान को सतसह प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, यद्यपि आप सभी प्रकार के वरदान देने में सक्षम हैं, परंतु मैं निर्विशेष मुक्ति, वैकुंठ लोक में शाश्वत निवास की सर्वोच्च मुक्ति जैसा कोई वरदान नहीं चाहता हूँ। यहाँ तक कि मुझे आपके परमात्मा स्वरूप की भी अनुभूति नहीं है। मेरी इच्छा है कि वृंदावन में निवास करने वाले बाल गोपाल की मूर्ति सदा हृदय में बसती रहे। इसके अलावा दूसरे किसी वरदान का उपयोग ही क्या है। हे भगवान, आपका श्यामल मुखारविंद जो काले रंग के लटों से सुशोभित है और माता जसोदा के द्वारा बारंबार चूमे जाने से बिंब फल की भांति लाल हो गया है, आपका यह स्वरूप हृदय में बसा रहे। दूसरे लाखों प्रकार के लाभों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। हे परमेश्वर, हे दामोदर, मेरा सादर प्रणाम स्वीकृत करें। हे अनंत, हे विष्णु, मुझ पर कृपा दृष्टि करें। मुझ मूढ़ का जो संसार के चिंता सागर में डूब रहा है, कृपा उद्धार करे और मुझे दर्शन दे। हे दामोदर, आपने बाल लीला में ही लकड़ी के उखल में स्वयं बंधे रहकर कुबेर के दोनों पुत्रों मणिग्रीव और नलकुबर को नारद जी के शाप से मुक्त किया था। उसी प्रकार मुझे प्रेमा भक्ति प्रदान करें। मेरी केवल यही इच्छा है और कुछ नहीं। मुझे निराकार मुक्ति की तनिक भी परवाह नहीं है, जो कि आपके प्रेम से रहित है। हे भगवान दामोदर, सर्वप्रथम मैं उस दिव्य रज्जु को जिसने आपको बांधा था प्रणाम करता हूँ। फिर मैं आपके उदर को प्रणाम करता हूँ जिसमें विश्व समाया है। फिर मैं आपके प्रिय सहचरी राधा रानी को प्रणाम करता हूँ और पुनः सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको प्रणाम करता हूँ, जो अनंत लीलाएं प्रदर्शित करते हैं। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री प्रभुपाद महाराज की। Hare Krishna. The morning Sri Bhagavatam class begin by his guest Surdas Prabhu. Surdas Prabhu ji की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Ram. Hare Ram. Ram Ram. Hare Hare. Wish you wonderful, consistent Kartik month, so that you can be focused on the Supreme Lord Krishna. Everybody is fine? Some people are not able to see me eye to eye. Why? Huh? There's some deficiency. Huh? I see nowadays even the temples, they come and wear anything and come to the temple. But in South India and other places, they have a temple dress code. Huh? सांगा तुम्ही साहेब हा माहिती आहे ना मंदिरचा ड्रेस कोड काय आहे anything and anything? No. When you go to the golf course, you have a different attire. When you go to the jogging track, you have a different attire. Why should you come in the temple in the shorts, half sleeves, Wrangler jeans? क्या मतलब 5 मिनट बैठने के बाद में चल फैक्ट्री में आपको मालूम है ना जीन में बैठने वाले को कभी मन स्थिर नहीं होता उसका मन करता है कि मैं केवल काम करूं because that attire is meant for factories. हाँ? अच्छा ठीक है ये सामने कुछ और डिग रहा है बोल रहा है कि माइनिंग करने के लिए था वो अब माइनिंग करो नीचे जाओ पातालोक में जाओ किसी जगह में भी जाओ मगर अटायर सीधा रखो. So those who are coming to the temple also they should have a proper attire. So I will request our temple commander to put that dress code systems intact for the temple. Because a lot of temples are trying to do that, and we should also try to start. In the morning, I saw somebody coming in the short. Jogging track में जाना है तो short पहन के जाओ ना मंदिर आना है तो कुछ तहजीब तो सीखो भाई. फैंसी के साथ में बाइक के पीछे जा रहे हो तो पूरा बाल उड़ रहे हैं वो चलेगा. मंदिर में जब आते तो बाल को ढक के आ जाओ भाई. भगवान के पास तो सुपीरियर क्वालिटी का बाल है घुंघराले बाल. राधा रानी का तो कुछ बात ही छोड़ दो. हाँ यस नो गलत कुछ बोल रहा हूं. आजकल हिंदू माताओं को देखो वो पूरा बाल छोड़ के घूमते रहते हैं. पहले तो ऐसा नहीं था. क्वेश्चंस आफ्टरवर्ड्स. Till that time, you sit down, okay? Whatever questions you have, far out, and sit down peacefully, and then shoot all the questions at the end of the pravachan. So, we have to learn all these things. That's why we are sitting in International Society for Krishna Consciousness. What it is called? It's not any other society. It's not any other society. Be cautious of that. Be conscious of that. And that you have to learn.
in association with the devotees. Isn't it? So let us start Kirtan. मृदंग वाला कितना है यहाँ पर? एक और मृदंग वाला चाहिए. कार्तिक महीने में ऐसा कीर्तन होना चाहिए कि किसी का हाँ? और अगर मृदंग वाला ही सो जाए तो क्या करें फिर? या लेट से आ जाए तो कैसा असं कसा करणार? हृदय माधव प्रभू कुठे आहे तुमच्या सगळा स्टुडंट्स? हाँ माया में असा कसा? प्रल्हादचा फ्रेंड मीन्स प्रसाद जेवा. हरिदास हाँ ठीक हो गया, अभी भी प्रॉब्लम है, क्या करें? So one more, anybody mridanga player, so that we can have a nice kirtan. Commander sir, Sarup Maharaj, please come with the kirtan fast. The world is dancing on the beat of percussions, and that's why Lord Chaitanya Mahaprabhu engaged khol, mridanga, in the service of the Lord. Just like the beating of the heart, it goes on like that. The kirtan's beating means mridanga, it should be always there. Jai Ho. Shri Shri Radha Madan Mohan Bhagavan ki jai. Nitai Gaur Sundar Bhagavan ki jai. Or Premanandi. Everybody is going to play kartals, hands. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Gopi Janavallabha Girivardhari. Jai Gopi Janavallabha Girivardhari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Gopi Janavallabha Girivardhari.
Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Everybody Haribol Everybody Haribol Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Everybody with love Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Everybody Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Haribo
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai. Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai. Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai. Radha Ramana Hari, Govinda Jai Jai. Radha Ramana Hari, Govinda Jai Jai. Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai. Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai. Radha Ramana Hari, Govinda Jai Jai. Radha Ramana Hari, Govinda Jai Jai. Jai Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jai Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jai Gauranita, 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 Jai Gauranita. Jai Gaura Hare, Jai Gaura Hare. Jai Gaura Hare, Jai Gaura Hare. Gaura, Gaura, Gaura Hare. Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Gurudev, 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 Gurudev. Jai Vishnupada Paramahansa Pravacharya Stotra Sat His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Everybody founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Vishnupada Paramahansa Pravacharya Stotra Sat His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Ki Jai. Jai Vishnupada Paramahansa Pravacharya Nitra Leela Pravishtam Gaur Kishore Das Babaji Maharaj Ki Jai. Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जाय। श्री राधा कृष्ण गोपनाथ राधा कुंज श्याम कुंज गिरि गोवर्धन की जाय। वृंदावन धाम की जाय। मथुरा धाम की जाय। द्वारका धाम की जाय। रामेश्वर बद्रीनाथ धाम की जाय। जगन्नाथपुरी धाम की जाय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जाय। मायापुर नवदीप धाम की जाय। गंगामय जमुनामाई की जाय। वृंददेव तुलसी महारानी की जाय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाय। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जाय। श्री ताई गौर सुंदर भगवान की जाय। श्री प्रभुपाद की जाय।
गौर प्रेमानंदे, बोलो आप सब की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। This morning we are reading from Srimad Bhagavatam, canto number 7, chapter number 15, and the verse number is 25. Hope that you will have focused attention. मन बड़ा चंचल, मन बड़ा चित्तचोर, कहीं पल और, प्रार्थनाओं के बीच में भी मन जाता है कहीं और। मंगल आरती में खड़ा रहने के बाद भी संसारी बात करने के लिए जनता है मन और। बेचारा कोई खड़ा रहता है मंगल आरती में तो उसको आके ही डिस्टर्ब करते हैं, अरे तुमको मालूम है क्या उधर पानी नहीं आ रहा, इधर पानी नहीं आ रहा। This is the tendency of the mind. This mind is very fickle. This mind is very completely cruel. So please, I'm just begging you that if your mind is not stable, you cannot stabilize your devotional service. Again, I am saying it. If you're not able to control your mind, if you're not able to stabilize your mind at the lotus feet of Krishna, it can create havoc, and which you may not be aware of. While we are singing Guru Puja, we talk something. When we are doing Mangalarti, we talk something. When we are doing devotional service inside, we talk something. When the purpose of human life is to see that we develop a tendency of controlling our mind and our senses. I mean, if it's not happening within your life, you have to develop check and balance system within yourself. Because nobody is going to help you unless you help yourself. And the modern world is full of the tendencies which are making your mind furthermore degraded. The only International Society for Krishna Consciousness is allowing you to engage your senses directly in Krishna consciousness. Directly into Krishna consciousness. That I will tell later on. Okay? And be aware of that. So this whole Kartik month is focus on that. Krishna is becoming more compassionate. In this month, he's telling his more intimate devotees to become more focused on me. How, when, we'll talk about it, okay? Rajastamascha satvena Sattvam chopasamena cha Etad sarvam guru bhaktya Purusho hi anasajay Purusho hi anjasajay Rajastamascha satvena Sattvam chopasamena cha Etat sarvam guru bhaktya Purusho hi anjasajay
Rajastamscha satvena Sattvam chosamena cha Etat sarvam guru bhaktya Purusho hi anjasa jay. Mothers,
Word to word translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Rajas Tama, the modes of passion and ignorance. Cha and Satvena, by developing the mode of goodness. Sattvam, the mode of goodness. Cha, also. Upasamena, by giving up attachment. Cha, and. Etad, these. Sarvam, all. Guru, unto the spiritual master. Bhaktya, by rendering service in devotion. Purusha, a person. He, indeed. Anjasa, easily. Jait, can conquer. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की ऐसे बैठ जाओ जैसे कोई गोंद से चिपकाया हुआ हो, स्थिर हो जाओ. Rock steady. One must conquer the modes of passion and ignorance by developing the mode of goodness. And then one must become detached from the mode of goodness by promoting oneself to the platform of Shuddh Sattva. All this can be automatically done if one engages in the service of spiritual master. With faith and devotion, in this way one can conquer the influence of the modes of nature. Kindly repeat after me. One must conquer the modes of passion and ignorance by developing the mode of goodness. And then one must become detached from the mode of goodness by promoting oneself to the platform of Shuddh Sattva. All this can be automatically done if one engages in the service of spiritual master with faith and devotion. In this way, one can conquer the influence of modes of nature. सबको इंग्लिश समझ आता है? हाँ? किसको ये इंग्लिश समझ नहीं आया, हाथ खड़ा करो. बापरे, असा कसा करता तुम्ही साहेब? इंटरनॅशनल सोसायटी कृष्ण कॉन्शियस मध्ये बसला, इंग्लिश नव्हती. So what to do now, sir? I will try to speak both after I. ध्यान से सुने. हिंदी ट्रांसलेशन हिंदी वासियों के लिए. मनुष्य को सतोगुण विकसित करके रजोगुण तथा तमोगुण को जीतना चाहिए और तब शुद्ध सत्व के पद तक उठकर सतोगुण से विरक्त हो लेना चाहिए. यदि कोई श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा में लगा रहे तो ये सब कुछ स्वतः हो सकता है. इस प्रकार प्रकृति के गुणों के प्रभाव पर विजय पाई जा सकती है. समझ आया ना सबको? अभी अब तो कोई बचा नहीं. हाँ? अगर कोई गुजराती है तो फिर उसको गुजराती में भी बोलूंगा. अगर कोई मराठी है तो मराठी में बोलूंगा. अगर कोई पंजाबी है तो पंजाबी. कोई तो है क्या पंजाबी यहां पर? बाप रे. ठीक है, you have a job. We have got a Sankirtan party come from Chandigarh. So we have a one candidate here. Okay? So, okay, we'll continue furthermore.
purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. लोग तो भारत में सिर्फ लैंग्वेजेस में पढ़ के उसी में रह गए, और जो भारतीय आ गए उन्होंने संस्कृत पढ़ के भगवदाम चले गए. हम सिर्फ लैंग्वेजेस में ही हैं. मी मराठी माझा महाराष्ट्र, मी गुजराती माझा गुजरात, मोदीचा गुजरात, हम कश्मीरी, हम पंजाबी. It's all connected with the body. We have to transcend these bodily designations. Just by treating the root cause of an ailment, one can conquer all bodily pains and sufferings. Similarly, if one is devoted and faithful to the spiritual master, he can conquer the influence of satoguna, rajoguna and tamoguna very easily. Yogis and jnanis practice in many ways to conquer the senses, but the bhakta immediately attains the mercy of Supreme Personality of Godhead through the mercy of spiritual master. Yasya prasadat bhagavat prasadho. पूरा सेंटेंस करो ना भाई. Thank you very much. If the spiritual master is favorably inclined, one naturally receives the mercy of the Supreme Lord, and by the mercy of the Supreme Lord, one immediately becomes transcendental, conquering all the influences of Satoguna, Rajoguna, and Tamoguna within this material world. This is confirmed in Bhagavad Gita, Sagunan samititan brahma bhuyayata kalpate. If one is pure devotee, acting under the direction of a guru, one easily gets the mercy of the Supreme Lord and thus becomes immediately situated on the transcendental platform. This is explained in the next verse. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurulmitam Yenai Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshitarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gauratuse Namah. Namo Brahmana Devaya Go Brahmahitaya Cha Jagatitaya Krishnaya Govindaya Namo Namah. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namosute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Vanchakalpadrubhyasya kripa sindhubevacha Patithanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah. Would like to thank everybody for being with us this morning. Especially, my dear friends, this is Kartik month, Urja month.
Radharani's month, special mercy of the Lord. आम तो आम गुटलियों के धाम, इस महीने बस अपना जीवन को समर्पित कर दो ऐसे कि जीवन अगर जीना है तो In the material world, we have unlimited yonis, unlimited species. But my dear friends, you have obtained a human form of a life. And this human form of a life is full of senses, full of fickle mind, full of material intelligence. My dear friends, this was also present in you in animal life. And even in a sense that you could do with one sense more than what a human being is doing. But you are not in animal life. You're not in an animal body. You're in a human body. Human body means a perfect gadget for acquiring transcendental knowledge. You may have indulged in this human form of life from childhood till now in acquiring some material knowledge, but somehow or other, by the mercy of a Vaishnava, you have come, you are sitting here. It's all because of a mercy of a Vaishnava. Because of some good karmas you have done in your previous life, you are sitting in this prangan of Radha Madan Mohanji, in the association of the devotees. So the purpose of this human form of a life is to engage all your senses in the service of Krishna. If you are not able to engage these senses in the service of Krishna, you will engage these senses in Maya. And those who are engaging the senses in Maya, wrath is waiting for them to give them a different yoni. Because they have not engaged these senses in the service of Krishna, Govinda, they are misusing the senses. Their next life is not going to be human life. Prabhupada ji says their life will be going to animal life. ध्यान से सुनिए, जिनके मनुष्य जीवन में इंद्रियां संपूर्ण रूप से भगवान समर्पित नहीं है, उनका मन संसारी विषयों में पड़ा हुआ है, और जिनका मन और इंद्रियां संसारी कार्यों में लिप्त है, उनका कोई गारंटी नहीं है कि उनका जन्म मनुष्य योनि में होगा। अगर मैं क्रूर शब्दावली से आपको ये बोलूं, क्या आप कुत्ता जीवन में जाने के लिए तैयार है? हाथ खड़ा करो। Prabhupada ji says to his disciples, are you wanting to go in a dog's life now? सभी लोग हंस रहे, फिर ऐसा बोल रहे, नहीं, कोई कुत्ता नहीं बनना चाहता है, या कोई पशु योनि में नहीं जाना चाहता। So Prabhupada ji is giving us Chetavani. He said that if you are not able to engage in the human form of a life, your senses in the service of Krishna, Govinda,
then your life is misused. Because the owner of the senses is Govinda. Govindam Adi Purusham Tamam Bhajami. Govinda is giving actual bliss to these senses. जब हम केवल भगवान का नाम जपते हैं, गोविंदा, भगवान के कई नाम हैं, he is giving the real pleasure. But who is Krishna's pleasure potency? Radharani. If you are not engaging in the devotional service of Krishna, pleasure potency of Krishna will not be pleased. Then who will be pleased? If your senses are not attached with Krishna, if your senses are completely captivated by the illusory energy of Krishna, that's called Maya, then what will happen? You may look for Maya Sukhaya here and there, but you will not get happiness anywhere. संसार के विभिन्न कार्यों में अपने मन और इंद्रियों को लगाने का अनुष्ठान करके देखिए, कहीं पे आपकी ये इंद्रियां सुखद अनुभव नहीं करेंगी। वो असंतुष्ट सदैव रहेंगे, क्योंकि आप इन इंद्रियों को संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा में नहीं लगा पा रहे। भगवान शब्द मतलब कृष्ण, भगवान का शब्द मतलब नहीं और कोई भगवान। भगवान का मतलब नहीं है गुरु नानक, भगवान का मतलब नहीं है जीसस, भगवान का यह मतलब नहीं है कि मोहम्मद। ध्यान से सुने आप, and you should be convinced about it. भगवान का मतलब नहीं देवी देवता, भगवान का मतलब देवी देवता नहीं है। उत्सवों की प्रणाली में ध्यान से सुनिए आप, मैं आपको क्या बता रहा हूं। भगवान का जन्म, कर्म सब कुछ दिव्य है। So he appears when in the which month? अष्टमी। और उसके बाद में कौन से उत्सव स्टार्ट होते हैं? उसके बाद का फिर आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं, गणपति आया ले, आला रे आला, गणपति आला। Then you have got Maya Devi, I'm saying Durga Devi, correct? Then you have many other festivals coming up. But actually, Krishna is telling that you focus on me. Focus your senses on me. That is why this Kartik month, सभी मंथों में अगर कोई अच्छा मंथ है, भगवान बोलते हैं ये कार्तिक मंथ बहुत अच्छा है। ध्यान से सुनो आप, अगर पेड़ों में कोई अच्छा पेड़ है, तुलसी, पौधों में तुलसी, और अगर कोई स्थान है, भगवान को कौन सा जगह अच्छा लगता है? भगवान बोलते हैं मेरे को तो द्वारका बहुत अच्छा लगता है। ध्यान से सुने आप ये, हाँ? और क्या है? और अगर सभी दिनों में अगर कोई भगवान को कोई अच्छा दिन लगता है तो कौन सा दिन है?
एकादशी। एकादशी का मतलब क्या है? ये प्रभु जी बोलते हैं कि भगवान के पास में। Ekadashi is given and facilitated to all of us so that we can restrain our senses, focus our senses in transcendental meditation, chanting the holy name of the Lord. That is our meditation. And Ekadashi means engaging your senses fully in the service of Krishna. Tongue, eyes, belly, ear, hands, legs, everything in the service of Krishna. And restraining yourself from indulging in continuous eating habits. So, my dear Prabhus, Lord is very, very kind. In all these ways, He is helping us to evolve from our positions, wherever we are, to transcend ourselves from mode of passion from ignorance, passion, and goodness. And if we are not continuously putting our best, then there's a possibility that we'll stand still where we are as it is. But while we are churning, the Vedic text, Srila Prabhupada says, Bhagavad Gita is beginning and Bhagavatam is deeper understanding of the Vedic scriptures. And if we don't enter into the Srimad Bhagavatam, we will not come to know the nectarian instructions which are coming from the sages. The sage Narad Muni is instructing to Yudhishthira Maharaj. And that's how we are getting a special instruction here in this chapter, that how we are going to conquer ourselves. Those of you who have come only this Sunday, just would like to give you some glimpse that what has happened in the previous 2-3 verses of the Bhagavatam. So, asankalpa jait kamam krodam kama vivajana arthanarthe shat lobham भयम तत्वामर्सनात्। ये सब चीजें संसारी लोगों को पीड़ा देता है, मगर दुर्भाग्यवश वो शास्त्र पढ़ने के लिए अनुरक्त नहीं है। उनके हृदय में ये वासना खत्म नहीं हो रही है। भौतिक प्रलोभनों के अंतर्गत उनकी वासना खत्म नहीं होती है, इसलिए श्रीमद् भागवतम के ऐसे प्रसंगों को पढ़ने में सक्षम नहीं है। इसलिए उनके संसारी पीड़ा सदैव उनके जीवन में पड़ी रहती है, वो उसमें से नहीं आते हैं। भक्त जो है वो बड़ा भाग्यवान है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को गुरु के आश्रय में दिया है और गुरु के आश्रय में ही हमको ये सब कुछ प्राप्त हो रहा है। शास्त्र संग, सिद्धि, स्वाध्याय सब कुछ मिलता है। संसारी व्यक्ति को यह प्राप्त नहीं है, क्योंकि वो सुबह से शाम तक सुख भोगने की लालसा में एक टहनी से दूसरी टहनी पर, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी टहनियों पर मंडरा रहा है। जैसे लंगूर एक पेड़ से दूसरे पेड़ में चला जाता है छलांग मार के, इसी तरीके संसारी व्यक्ति भी माया के वशभूत लंगूर बन चुका है। उसे जीवन के अभिप्राय के महत्वपूर्ण प्रसंगों का ज्ञान नहीं है।
इसलिए by making plans with determination, one should give up lusty desire for sense gratification. इंद्र तृप्ति के सभी साधनों को हमें परित्याग करना होगा. चलिए बताइए, ये कौन इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? जोर से बोलिए, किसी को मालूम भी नहीं है नारद मुनि कौन है. वो तो अट्टहास करते रहते, अरे तू तो नारद आदमी है. So whom he is instructing? युधिष्ठिर महाराज कौन थे? जेश भ्राता पांडव कौन थे वो बताइए ना सर. Who was very much a divine person. That's why he was put as a Raja on Hastinapur. Who did that? Swayam Krishna. After killing how many people? अरे सुन रहे हो क्या? ध्यान भटक गया. ओ माता जी किधर जाना है? बसा तुम्ही? बसा बसा. कुठं जाणार? बहुत कोई पतिदेव वेट करने दो, आज उनको आज ब्रेकफास्ट मत खिलाओ उनको, चलेगा. कथा सुनो, वो ढूंढते ढूंढते आपके पास आ जाएगा. फिर तो किधर गया मेरा? So this whole attraction and so many things are there. Just on Sundays, just focus on your katha. After killing how many crores of lives? 60. हाँ, पशु भी थे. सो असंख्य जीवों का खात्मा हुआ और युधिष्ठिर महाराज को राज्य अभिषेक करा के, और वही युधिष्ठिर महाराज एक नम्र जीव बन के नारद जी से उत्तम प्रसंगों को रिट्रीव कर रहे हैं और हमें ये मक्खन मिल रहा है. churned. Kartik month is called also churning. Krishna is advising mother to churn more and more and more. Okay? वो अपनी मां को बोल रहे, ये सब कार्य छोड़ दे, मैं तुम्हारे सामने हूं, मुझ पे फोकस कर ले. यशोदा दामोदर माँ को बोलता है ये छोड़ दे, तो बहुत काम सुबह से शाम तक काम करती रहती है, बटर बनाती है, वो बनाती है, गायों का गोबर ये करती है, खेत में जाती है. मगर नाउ यू जस्ट फोकस, आई एम हियर, व्हाई डू यू फेयर? हाँ, Krishna is saying, you just focus on me. This whole cosmic creation is there. There is unlimited Vedic scriptures. You have to churn these scriptures and come to know that Krishnastu Bhagavan Swayam, my dear friends. Out of all the Vedas, you have to come to know that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Out of all the devotional aspects, you have to focus on Krishna, the Supreme Personality of Godhead. And when you engage all your senses in the service of Krishna in the Kartik month, my dear friends, you will be purified of your existence, which is full of lust, greed, envy, and hate. That's what is Narad Muni telling to Yudhishthira Maharaj. We are not Yudhishthira Maharaj, I am not Narad Muni. We are all part of this material world. And if we want to resurrect from this material world, we have to constantly hear Bhagavad Katha. And Prabhupada ji says, you have to hear from Bhagavad Katha from the transcendentalist, who is coming in parampara. Otherwise, there are so many Hatha Yogis, there are so many people. Why they are endeavoring? What for they are endeavoring? Why they are unsatisfied? What is the reason for their
unsatisfied? Because they are not focusing on the Supreme Personality of Godhead. Krishna is becoming very compassionate on the mother, so that you focus on me because. What is the beauty of Yashoda? While she is picking up gobar, she is thinking about Krishna. While she is churning the butter, she is thinking about Krishna. While she is cooking, she is thinking about Krishna. And Krishna says, those devotees who are always Naham Tishtami Vaikunthe. Yoginam Hridayocha. Yatra gayanti madbhakta tatra tishtami narada. जहां पर समूह में कीर्तन हो रहा है, जहां पर इंडिविजुअल में मन में कीर्तन हो रहा है, वहां पर कृष्ण साथ है. These facilities are facilitating your soul to get more focused on Krishna. That is the beauty of devotional service. And here Narada Muni is telling that all these anarthas can be given up. Similarly, give up the envy. One should conquer anger by discussing the disadvantages of accumulated wealth. जब हृदय की ग्रंथियों के अंतर्गत हमारी वासना की पूर्ति नहीं होती है, तो हमारे जीवन में क्रोध उत्पन्न होता है. ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, असंतुष्ट भयानक रूप में हमारे जीवन को शुद्ध प्रसंगों से लेके कहीं और पटक देता है. न जाने ये मन क्या चाहता है, न जाने ये भटका हुआ मन किसकी तलाश कर रहा है. इस भटके हुए मन को ये भी मालूम नहीं मैं कहां जा रहा हूं. इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए हमें भगवत भक्ति में लगना होगा. क्योंकि सभी प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं जब हमारी इंद्रियां कृष्ण के सिवा कहीं और एंगेज हो जाती हैं. वही बता रहे हैं नारद जी. वन शुड गिव अप ग्रीड, लालसा, लोभ छोड़ना चाहिए. बाय डिस्कसिंग द ट्रूथ वन शुड गिव अप द फियर. सच चीजों को डिस्कस करने से हमारा भय दूर हो जाता है. सच क्या है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम. सच ईश्वर है, सच भगवान है, सब कृष्ण है. जब हम इस कृष्ण की चर्चा में अपने मन और इंद्रियों को लगाएंगे, स्वतः ही हमारे जीवन में शांति और सबूरी आ जाएगा. आप सोच रहे हैं कि डिग्री पाने के बाद मेरे को शांति आएगी? होता है क्या? डिग्री पाने के बाद में क्या प्रॉब्लम आता है? नौकरी है कि नहीं? नौकरी ढूंढने के लिए कहां कहां भटकना पड़ता है. और मैं कई बार बोलता हूं, नौकरी मिल गई तो माता जी बोलती मैं छोकरी कब ले आऊंगा आपके लिए. Isn't it? That means at any given time you're not able to conquer your mind and senses. So under these situations and under these stepwise processes of self-immolating yourself, where you will get Krishna absolutely. As I've said many times, from childhood till your college days, you're all trying to achieve material knowledge. You're going passionately after it. And when you get some degree, you're passionately going for your jobs. And when you're going for the jobs,
You are not still satisfied. You tell me anybody who is sitting here who is satisfied with the job. Raise your hands. Nobody. Artificially, they are trying to satisfy themselves from going morning till evening, and at the end of the 1 month, they see that I have given up so much of time and energy and everything. And he's not getting anything. 1 लाख रुपया मिला, 2 लाख रुपया मिला, 3 लाख रुपया, उसके बाद भी कुछ हाथ नहीं आता है. और हमारा केवल प्रलोभन यह है कि हमको थोड़ा सा पगार मिल जाए. और पगार प्राप्त करने के बाद भी अर्धांगिनी वेट कर रही है. कितना आया, मेरे को कितना देगा. बच्चा वेट कर रहा है. पापा पापा मेरे को ट्यूशन फीस देना है. पापा पापा मेरे को एडमिशन फीस देना है. Sorry to say, I have to tell you the truth. My dear friends, I have seen all the parents of my all many dear ones. Even if they are in Krishna, on the path of devotional service little bit, उनके मन में हमेशा यही रहता है. ध्यान से सुनिए आप. मेरे जिस दिन मेरे 2 बच्चों का शादी वादी होगा ना प्रभु जी, मैं उस वक्त में फुल टाइम आ जाएगा. हाँ, मैं इनको, उनके मन में भी उस टाइम पे क्या होता, what is there in their mind? They are always thinking about how to take care of the children. That means their attention is very partial. Even if they are on the track, still it is partial. And while there is a partial devotional service happening, there is possibility this lust, greed and envy will not leave you. ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं. There is a possibility all the things you will not be completely without this. Prabhupada ji is talking that unless you have a complete influencing faith under the lotus feet of Guru and Krishna, you are not going to be satisfied. That is what it is said here. Anigviksha soka moha dambam mahud upasaya yoga antarayan monena himsan kamadi anihaya. By discussing spiritual knowledge, one can conquer lamentation and illusion. Lamentation क्या हुआ? Illusion क्या हुआ? ब्रह्म. दुख और ब्रह्म को दूर कर सकते हैं जब आप कृष्ण की कथा को सदैव करते रहेंगे. अगर आपको ब्रह्म और दुख से परे होना है तो कृष्ण कथा सदैव करते रहो. मगर कोई करता है क्या? बताइए ना सर. Does anybody do Krishna Katha at our home? Does these all so-called advanced materialistic people discuss Krishna Katha at their homes with their children? Sir, it was happening. It was happening 100 years back. It was happening 200 years back. When everybody used to come, return from their khet or this and that, in the evening, they would always play kirtan. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama,
Ram Hare Hare. This was happening every evening when you return home. Your dadi will tell you the stories of Krishna. Your parents will tell you something about Krishna. But nowadays, when the young children come to the home, father is already glued to the cricket match. Papa, Papa, क्या हुआ? किसने बनाया? कितना रन? आजा, come, sit down next to me. Mother feels very happy. Mother feels very happy that the son has come early and father is sitting at home. He's glued to the cricket. And then mother feels very happy. What should I bring you? You will take paneer pakoda? You will take paneer pakoda with, thumbs up? Or should I give you Coca-Cola? Then mommy said, "Nay, I have got only 2 things in my fridge. What should I serve?" मम्मी मेरे को कोका कोला चाहिए क्योंकि वहां पर एडवर्टाइजमेंट आ रहा है बीच में जब खेल रहा है ना क्रिकेट वहां पर आ रहा है कोका कोला पी लो. This rascal becomes tame towards the senses and he demands from the mother same thing. He says, मेरे को कोका कोला चाहिए और मेरे को पकोड़ा चाहिए. और बाप बोला अरे कम अरे यार इसने तो बहुत अच्छा छक्का मार दिया. So this is the modern father. And early times, my dear friends, when we used to go back to our homes, not you, me, we used to have a arti together with the father. We used to hear some prasanga of Bhagavad Gita. But the rascals nowadays, they are all indulging in the sense gratification. Father, son, everybody. And दादाजी को कहाँ पे बिठा दिया? गांव में. और कुछ तो आश्रम में भी डाल देते हैं. गांव में उसको लाते नहीं है क्योंकि जगह ही नहीं है. He becomes claustrophobic. When he comes to the flats, he said, अरे यार मेरे को कहाँ लाया? मैं तो वहां पर अपने दोस्तों के साथ में गांव में बैठता हूँ 2-3 मैं लूंगी मैं तो यहाँ पर बैठा. अरे पापा आपको सूट पहनना पड़ेगा. अरे यार तेरा सूट का तो ऐसे का तैसा मैं वापस गांव जाऊंगा. पता चला the child doesn't get a nurturing from the dadaji. There is a disconnect between the young age and the old people. Young people say मेरा बाप तो बुढ़ा हो गया और दादाजी काबिल नहीं है शहर में आने के लिए. So this nonsense is happening in the modern age, my dear friends. You have to recollect yourself from all this degradation for earning money and indulging into this lust, greed and envy, which is all happening under the clutches, under the influence of earning more and more and more. Ye dil mange more. Every time your dil is asking more and more. And in that, your dil never becomes satisfied. When your dil will be satisfied, Shastra says, when you will be engaging your senses in the service of Krishna, absolutely your senses will be pacified and they will not ask for ye dil mange more. It will become संतुष्ट. संतुष्टता जा रही है. इसीलिए काम, क्रोध, मद, लोभ वर्तमान स्थिति में बढ़ रहा है. ध्यान से सुनिए. Prabhupada ji is saying where the innocent animals are killed. भविष्यवाणी Prabhupada ji का. Wherever the animals are killed, these karmas will come back and the world will be engulfed with the wars. And my dear friends, the world is engulfed in the wars. Those who claim to be the knower of knowledge, they are indulging in the absolute war, killing millions of people. It's not they are doing it, it's their karma doing it. Those who are killing innocent cows, those who are killing innocent animals, because Krishna, Srila Prabhupada says, all these are all part and parcel of the Supreme Personality of Godhead, and they are killing randomly innocent animals, and this wrath is going to come back to this material world and there will be devastation.
And that's what you see nowadays. Under the aggression, what's happening? करने कराने वाला ईश्वर होता है, बहानेबाजी हम लोग करते हैं जब तक हमारे जीवन में संपूर्ण रूप से श्रद्धा और भक्ति नहीं होगी. That's what it is said here. By discussing spiritual knowledge, one can conquer lamentation and illusion by serving a great devotee. Now, listen this. By serving a great devotee, one can become prideless. By keeping silent, one can avoid obstacles on the path of mystic yoga. And simply by stopping sense gratification, one can conquer the envy. Yesterday, my Anuj brother was saying a wonderful description of the ed. What was he saying? Neighbors. Neighbors. Huh? Neighbors envy, owner's pride. ओनिडा टीवी. तो बेचारा तो ओनिडा बेचारा बदनाम हो गया, मगर आजकल तो बहुत सी चीजें ऐसी है. नेबर्स एनवी. गाड़ी लाया, कहां से लाया, क्यों लाया? So all these things are part of the life where you become more and more envious. But if you want to conquer this nature, you have to surrender to the great Acharya who has taught the path. I'm not saying this. This is Vyasadeva saying. In the Srimad Bhagavatam, encyclopedia of the Vedic literature, he says that all these anarthon ko aap विजय प्राप्त कर सकते हैं, केवल एक शुद्ध भक्त के चरणारविंद में जा सकते हैं. गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्तित कोरिना आज्ञा. The moment you surrender to a transcendentalist, he will pacify he will pacify your family, he will pacify the nations, and he will pacify the whole world, because he is engaging everybody in the absolute divine service of the Supreme Personality of Godhead. That is Prabhupada. That is Prabhupada. You cannot lump him with any other guru. He is transcendental. He is carrying the transcendental message of the Vedic scriptures through Guru Parampara to us and those who will take up this process of Krishna consciousness very seriously. They will be able to conquer their senses, mind, and they will be pacified. That's why International Society for Krishna Consciousness says that we engage, we engage people's mind and senses in the service of the divine couple, Radha Krishna, by establishing these wonderful temples and by establishing the process of bhakti, which has been given by the great acharyas. And you have to only simply accept the proposal as it is without adulterating and concocting the message. And the moment you take up this message without any doubt, you will be very happy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Kripaya bhutajam dukham Daivam jayat samadhina Atmajam yoga viryena Nidram sattva nishevaya. By good behavior and freedom from envy, one should counteract suffering to other living entities. By meditation in trance, one should counteract suffering due to providence. And by practicing Hatha Yoga, Pranayam, and so forth, one should counteract suffering due to the body and mind. शरीर में कुछ प्रॉब्लम है तो योग करो, बीमारी अंदर पड़ा हुआ है तो कुछ करो, मगर आलस में पड़े रहोगे तो कैसे करोगे? हाँ? ये सब धारणाएं आपके शरीर को शुद्ध करने के लिए है, मगर हम लोग कर नहीं पाते. हाँ? और similarly, by developing mode of goodness, especially in regard to eating, one should conquer sleep. हाँ? अरे मेरा नींद तो सुबह खुलता नहीं है. आजकल कैसा खिलेगा? ये थोड़ी है, ये कंप्यूटर थोड़ी है.
टक 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 टक, हाँ आ गया गूगल, आ गया गूगल, गुरु आ गया गूगल, गूगल गुरु. This is controlling your senses, mind. Computer is not going to control your mind and senses. If you are glutton, rascal, if you are eating 12 o'clock in the night, 1 o'clock in the night, how do you think that you will get up at 4 o'clock in the morning? It's asambhav. That's why you have to regulate your senses, and that also you have to eat ahar, which is not tamoguni. If you are rascal, you are eating crabs, frogs, snakes, do you think that you will get up at Brahma Muhurat time? Or if you eat cow meat, or if you eat sheep meat, or whatever it is, do you think you will get up at Mangalarti? It's not possible. सतोगुणी आहार के अंतर्गत तुम्हारे जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में भगवान उठाएंगे, मगर तुम अगर पाप वृत्ति में इंडल्ज करके उठना चाहोगे, वो उठोगे किस लिए? तुम्हारे जीवन में पैशन, काम, क्रोध, लस्ट भरा हुआ. तुम 4 बजे तक डिस्को में नाचे रहोगे रास्कल, बिकॉज तुम मांस खा रहे हो, मगर तुम ब्रह्म मुहूर्त नहीं उठ सकते हो. कितना भी प्रयास करोगे ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते. ये सब ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए सतोगुणी आहार तुमको चाहिए. ये सतोगुणी आहार तुमने परित्याग किया, तुम पिज्जा हट में जाके कुछ भी गंदगी खा रहा है, बच्चों को भी खिला रहा है. When your mouth is not controlled, your belly will not be controlled. Your belly is not controlled, your genitals will not be controlled. And whatever is happening with this gadget, you will be creating utpat, nothing else. That is why we had to adhere to the instructions of the Vedic Shastra coming from Narad Muni, and which should be taken very submissively, like the Yudhishthira Maharaj is taking from Narad Muni. When you take this transcendental subject matter as it is from a transcendental guru, who is going to conquer, who is going to eradicate your nescience by inducing you to read Vedic scriptures, then only you will be able to rise above from the mode of passion, mode of ignorance. Then slowly, slowly you will enter in the goodness, and while you are in goodness, this transcendental subject matter will seep in, and you will go beyond goodness also, and you will enter Shuddha Sattva platform. So, it is said here in this verse, Rajastamascha satvena satvam chopasamine cha etat sarvam guru bhaktya purusho hi anjasa jaye. एक आचार्य श्रील प्रभुपाद, जिनके हृदय में असंख्य प्रकार के प्रसंगों से भरा हुआ, शास्त्र से भरा हुआ, दिव्य ज्ञान से भरा हुआ हृदय छलक रहा है कि मैं कैसे सभी जीवों को उद्धार कर सकूं ताकि वो पुनः भगवत धाम चले जा सकें. 70 वर्षीय ट्रांसेंडेंटलिस्ट आचार्य पाश्चात्य देश चले जाते हैं और उन पे कृपा बरसा रहे हैं जो मांसाहारी है, मदिरापान करते हैं, व्यभिचारी है, क्या क्या नहीं करते हैं. उनके ऊपर दया का बूछाड़ कर रहे हैं और इस दया के अंतर्गत उन्होंने युक्ति का एक उद्गम किया कि हम जैसे भारतीय जो कि पाश्चात्य जगत के नकलची बंदर बन चुके हैं, उनको भी अकल आ जाए. तो उन्होंने पाश्चात्य देशों को, जिन्होंने अरूजतम स्थिति पे पहुंच के, क्योंकि उसमें कुछ सुख नहीं मिला, मर्सिडी चलाने के बाद उनको सुख नहीं मिला, बंगले में रहने के बाद सुख नहीं मिला, वर्ल्ड का बेस्ट से बेस्ट लिकर पीने के बाद भी सुख नहीं मिला, जॉनी वॉकर पीने के बाद तो तुम गधा की तरह भागते रहो, चलता रहेगा.
ये सब करने के बाद भी वो सुखी नहीं थे। 4-4 पत्नियां, 10-10 पत्नियों के साथ अवैध संग करते हुए, वो अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, उसका शरीर अच्छा नहीं, उसका स्तन अच्छा नहीं, उसका चेहरा अच्छा नहीं है। That's how they develop the divorces in the Western world, my dear friends. आज कुछ बोल दिया ऐसा, no, I don't divorce you. That's not Vedic language. That's not Vedic knowledge. Prabhupada ji says Vedic knowledge means you have to follow. Prabhupada ji says, what is Vedic knowledge? एक राक्षसी अर्जुन को बोलो मेरे साथ शादी करो, भीमा से। हाँ, तो प्रभुपाद जी बोला, कृष्ण ने बोला नहीं, तुमको तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर क्षत्रिय। इफ शी इज प्रपोजिंग यू, यू कैन नॉट रिफ्यूज। दैट वॉज वैदिक एरा। क्या? दैट वॉज वैदिक एरा। बट इन दिस एज ऑफ कलयुगा, everything is going topsy-turvy, and that's how our senses and mind and everything is going haywire. So if we have to save ourselves, we have to tame our senses, and then only we'll be able to rise above the modes of material nature and go very nicely back home, back to Godhead. And Srila Prabhupada gives us a wonderful purport in this, in this shloka. He says, just by treating the root cause of the ailment, जब आपके पास में कोई भी बीमारी होती है तो ठीक नहीं होती है, तो आप विभिन्न प्रकार के डॉक्टरों के पास जाते हो। अरे मेरे को बताइए, मेरा प्रॉब्लम दूर नहीं होता। तो कई डॉक्टर हैं, वो सिर्फ आपके सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे थे, मगर एक डॉक्टर के पास जाता है, यार मैं जरा देखूं तुम क्यों बार बार बीमार पड़ता है, तो वो डॉक्टर आपको कारागार हो जाता और वो आपको सही दवाई देता। हाँ, है कि नहीं? बोला हाँ, क्यों? बोला यार तुम नाड़ी परीक्षण करके तुम्हारा देख रहा प्रॉब्लम ये है, तुम उसको ट्रीट नहीं करा, तो सब करने के बाद उसको सब बीमारी दूर हो जाती। वर्तमान स्थिति में सभी लोग बीमार पड़े हुए हैं, मगर उनको मालूम नहीं कि असली डॉक्टर कौन है, इसलिए वो सभी के पास चले जाते हैं और रोग ठीक नहीं होता है। ये भव रोग ठीक होता है जब हम गुरु के आश्रय में चले जाते हैं। व्हाट इज भव रोग? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदोष, इसका कोई निवारण नहीं कर सकता जब तक आप दिव्य गुरु के, ट्रांसलेटेड गुरु के चरणों में नहीं जाएंगे, जो आपको संपूर्ण रूप से कृष्ण की ओर लगाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। The true guru will say, chant holy name of the Lord, eat Krishna prasadam, associate with the devotees, don't indulge in sense gratification, engage your senses in the service of bhakti. When you will engage all your senses in the service of Krishna, my dear friends, then your senses, your mind will be pacified and you will be able to surrender to a transcendental and accept Guru. How many people in this sabha have taken the shelter of a guru? हाथ खड़ा कीजिए। बाकी सब क्या सेंट्रल पार्क में जाने के लिए आए हैं क्या? हाँ, बताओ भाई। There are two things. Either you can go to Central Park or you come to Hare Krishna मंदिर। हरे कृष्ण मंदिर में आने के बाद में इंद्रियां भगवान की सेवा में, और सेंट्रल पार्क में इंद्रियां इंद्र तृप्ति में। हाँ, इंद्र तृप्ति विषय है और भगवत भक्ति अमृत है। जिस दिन आप ये अमृत चखने की लालसा में रहेंगे, तब जाके ये भवरोग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। Similarly, one is devoted and faithful to his spiritual master. Prabhupada ji says, just simply be faithful to your spiritual master.
Yasya prasadat Bhagavat prasadu. Yasya prasadat na gati kutopi. The moment you take the shelter of a guru, you will get everything in your life. You will get peace. You get prosperity. You get everything in your life. But there is a process. There is a process. By giving up your suffering in the material world, just simply surrender to the lotus feet of a guru and adhere to the instructions of the guru, engage yourself in the service of Krishna, you will get everything. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. When you are under the shelter of a bona fide guru, that is what it is said, Yasya prasadhat. One who has taken this prasad from a bona fide guru, whoever has taken the shelter of a bona fide guru, he is going to get connected with Krishna. All his ignorance, all his passion, all his greed, everything will evaporate because he is truly engaged in the service of Krishna under the bona fide spiritual master. All of you, my dear friends, you must immediately inquire, how should I surrender immediately so that I can go back home, back to Godhead, so that I can conquer this bhava roga of janam mrityu jaravyadi and be blissful if you want to be shant, peaceful. Yogis and jnanis practice in many ways to conquer the senses, but the bhakta immediately attains the mercy of the Supreme Lord. योगी और भोगियों में बहुत प्रॉब्लम है, ज्ञानीज में, मगर भक्त जो है इमीडिएटली भगवान की शरण में जाता है, क्योंकि वो सभी इंद्रियों से भगवान की सेवा में लग जाता है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम. If the spiritual master is favorably inclined, one naturally receives the mercy of Supreme Personality of Godhead. भगवान की कृपा बड़े आसानी से मिल जाती है. Because we have learned, spiritual master is a transparent media through which you can see Krishna. Om Ajnana Timarandasya Jnananjana Shalakaya Chakshul Umlitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. जिन्होंने मेरे आंखों से अंधकार दूर कर दिया, जिन्होंने मेरे को गोविंद के चरणों में ला खड़ा कर दिया, ऐसे गुरु को बारंबार प्रणाम करता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे अज्ञानता को दूर कर दिया. So my dear friends, we have to do that. We have to do it immediately, without getting deviated from the path of transcendence, and become wonderful devotee. There is no loss in the path of divinity, rather gain. You give up sense gratification. You adopt the process of engaging your same senses in the service of Krishna. And Prabhupada ji is saying, this is confirmed in Bhagavad Gita. Those who are taking up the process of bhakti, sagunan samitatyetan, brahma bhuyayata kalpate. Krishna is saying this. And a pure devotee acting under the direction of the Guru can easily get the mercy of the Supreme Lord and thus becomes immediately situated on the transcendental platform. So on this path, my dear friends, in the past, millions of years, and the future also millions of years, those who will adhere to the instructions of Bhagavad Gita and Bhagavatam, they will automatically resurrect from this material world and go back home, back to Godhead. And the process is with us. Process is to be adopted. Process has to be implemented in ourselves and take up the process very seriously and go back home, back to Godhead. That's what we have to do. And it is said that spiritual master should be considered to be directly the Supreme Lord.
He gives transcendental knowledge for enlightenment. Consequently, for one who maintains the material conception that spiritual master is an ordinary human being, everything is frustrated. His enlightenment and his Vedic studies and knowledge are like the bathing of an elephant. जिसने भी कभी किसी स्थिति में अपने मन से सोचा ये गुरु साधारण पुरुष है, वो अपने जीवन में कभी प्रगतिशील नहीं बन सकता, क्योंकि उनके अंदर अज्ञानता का जो सरोवर भरा हुआ है वो कब दूर हो जाएगा? जब वो चरणामृत के कुछ बूंदे पी पी के अपने इस मायावी सरोवर को ध्वस्त कर देगा, तभी जाके वो गुरु की महिमा को समझ सकता है. You cannot take your spiritual master as an ordinary person. He is the representative of the Supreme Personality of God in parampara. Not yogi bogis, not rascals who are pecking out something from the Shastra and claiming that they are gurus. They cannot give you anything. They have no adhikar to give you transcendental world. It is the transcendentals who can give you spiritual world. This Krishna is teaching you in this month of Kartik that he cannot be conquered by anybody. He will be conquered by love. मैं अपने प्रेमी भक्तों से ही जीता जा सकता हूं. इसीलिए मैं कार्तिक महीने में अपने शुद्ध भक्त से बंध भी जाता हूं. हां, अपने शुद्ध भक्त से बंध भी जाता हूं. कोशिश तो करे ब्रह्मा जी मेरे को बांधने के लिए, कोशिश करे इंद्र मेरे को बांधने के लिए. मैं अगर बंधा सकता हूं तो प्रेमा भक्ति से ही मैं बंध सकता हूं. यशोदा मां सदैव भगवान का चिंतन मनन करती हैं और भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने प्रेममय इस सुंदर लीला से अवगत कराते हुए उन्हें कहते हैं, बाकी अन्यथा सभी छोड़ के मुझ में तुम फोकस कर लो. And this Kartik month is the greatest month, my dear friends. In this month, don't live even one day without offering a lamb to Krishna. This is the most potent month of all the months by which Krishna can give you love of Godhead. Just by simply offering one lamp. Padma Purana, it is said that even a rat stole one wick every day. Rat stole every day one wick. And he got liberation. Rat. And that rat became the resident of Vidarbha. If a rat in the month of Kartik, by stealing a wick for the Lord, can transform, why cannot you and me transform by offering one lamp to Yashoda Damodar in this month, every day, without fail, morning and evening, and by this endeavor, you can go back home, back to Godhead. You just do it. You just do it, and you will see that you will conquer within you the enemies which are completely hovering over your head like the fangs of venomous snakes. But the same venomous snakes will get pacified, and you will become a wonderful devotee, and you will be able to conquer, just like a snake charmer can hold the head of a snake.
Likewise, the process of bhakti can hold the venomous snake of your resurrected Kam, Krodh, Mad, Lobh. When you come in contact with the material modes of material nature, when you are engaged in your own activities for morning till evening, these venomous snakes, they are hovering on you, they are frightening you, they are killing within you the personality of devotional devotee. Just simply chant the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. The simple method, simple process has been given to us by none other than Lord Himself. My dear friends, Lord Chaitanya Mahaprabhu, Mahavadannaya Krishna Prema Padayate, He is giving us everything. He is saying that in this Kartik month, chant, dance, offer gilliams, and in your homes, organize your Damodar Ashtak. Call the devotees, call your neighbors. They are all under ignorance. Lit unke hriday mein अज्ञानता के भरी हुई हैं, उनके हृदय में भी अपने ये भक्ति के दीप जलाइए। इस महीने में हर घर में प्रोग्राम कीजिए, दामोदर अष्टक पढ़िए। उन लोगों को अवसर दीजिए जिन्हें मालूम भी नहीं है कि कार्तिक महीना क्या है, दामोदर अष्टक क्या है, यशोदा दामोदर क्या है। हाँ, कुबेर के 2 सन कौन है? हाँ, ये सब मालूम नहीं है। अवगत कराइए उनको भगवान की इन सुंदर लीलाओं से, प्रसंगों से, तो उनकी जीवन की ग्रंथियां भी टूट सकती हैं। वो भी भगवत भक्ति में अनुरक्त होकर अपने जीवन को पवित्र कर सकते हैं। ये अवसर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ प्रदान करता है, क्योंकि अन्यथा संसार में जीवों के इंद्रियां विषयों में लगी हुई हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में भगवत भक्ति के पथ पे अनुरक्त होके अपने जीवन को इस पथ पे डालता है, तो वो कृष्ण कॉन्शियस बन जाता है। कृष्ण कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब ही है अपने इंद्रियों और मन और बुद्धि को संपूर्ण रूप से कृष्ण के लिए लगाइए, तो आप सुखद और सुखद से ऊपर दिव्य अनुभूतियों में प्रवेश करेंगे, जिसकी वर्णन, जिसका गणना आप स्वयं ही दूसरे को कर सकते हैं। तो आप भी इस भगवत भक्ति कार्य में लगे और अपने आप जीवन को सुखद कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you very much, and of course many things I had to say, but we'll culminate here. It's 10 o'clock. Anybody has got any questions or comments to add? Yes, Vaishnav Angri Prabhu, he has to comment. Yes, please. Hari Bol, sabhi baithiye, don't make chaos. There is a question coming from also a wonderful devotee. This can also help you. I know आपके knees pain कर रहे हैं क्योंकि अभ्यास नहीं है, थोड़ा सा और अभ्यास। जिस तरीके से यशोदा माँ अभ्यास कर रही है भगवान को बांधने के लिए, तो 2 उंगल रहता ना बाकी, तो उस 2 उंगल की व्याख्या क्या है? Little more determination, little more love, and while your joints may be aching and making aching and paining and crying, but still you hear this question, it will help you to progress on the path of spiritual life. Yes. Yeah. You see,
You can see this wonderful example yourself, because Srila Prabhupada is a transcendentalist. He came from a transcendental world, Vrindavan. He went to New York. क्या लिखा हुआ? प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र क्या है? पाश्चात्य देश तारने. और उसका क्या पूरा पढ़िए जरा. निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तार. इम्पर्सनलिस्ट, जो मालूम भी नहीं, कुछ नहीं है, उनको भी तार दिया उन्होंने. मदिरा पान करने वाले स्वयं प्रभुपाद जी याचना कर रहे हैं बॉस्टन के पियर पे कि हे भगवान, मुझे कहां लाए आप, मुझको मालूम भी नहीं है कि ये मेरे संदेश को एक्सेप्ट करेंगे क्या नहीं करेंगे. और उन्होंने उनके बीच में बैठ के जो गांजा, अफीम, चरस, दारू, व्यभिचार सब करते थे. और जो भी सिंसियर भक्त थे, जिन्होंने प्रभुपाद जी के आश्रय लेके हुए जो भी प्रस्तावना दिया उन्होंने, जिसने भी एज इट इज ले लिया, वो दिव्य कार्य में सफल हो गए. दिव्य कार्य में सफल हो गए कैसे? क्योंकि प्रभुपाद जी ने उन सभी सफेद हाथियों को भारत लाया. भले ही वो संपूर्ण रूप से विशुद्ध सत्व में प्रवेश ना किए हो, मगर केवल अगर उन्होंने तमोगुण रजोगुण को छोड़ के सतोगुण की प्रणाली को अडॉप्ट किया, ध्यान सुनिए आप, they adopted what Prabhupada ji gave, and while adopting that, in the process of that adoption, they elevated the consciousness of the Indians who may be thinking that they were in Satogun, but not in any guna. They were all things. But they have also taken up the process of Krishna consciousness. Krishna says, अगर मैं चूहे को भी इस भक्ति के प्रणाली में उत्तम गति दे सकता हूं, तो ऐसे लोगों ने जिन्होंने ट्रांसडेंटलिस्ट को संपूर्ण रूप से फॉलो किया, वो भी महत्पाद रवजो अभिषेकम, उनके चरण धूलि से इस भावसागर से पार हो सकते हैं. पार हो सकते. हमें वो नहीं सोचना. हमें सच्चे गुरु, क्योंकि कहा जाता है जो सच्चे गुरु होता है वो अपने सभी शिष्यों को भगवत धाम लेके जाता है. तो हमारे जीवन में सब रोग खत्म नहीं हुए हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि मेरे गुरु में रोग लग गए. हाँ, हमारे रोग खत्म हो सकते हैं. हमारे वैराग्य, हमारे अटैचमेंट, lotus feet of spiritual master, then automatically leave up to him. This is my little understanding, and we have seen some of the examples practically doing devotional service. They have given up jobs, they have given up their this thing, that thing, and we have seen they have left the body thinking about Krishna. And any person who is, leaving the body thinking about Krishna is called Vishuddha Sattva. You see? We should call Vishuddha Sattva. This is my understanding. But Vaishnavangri Prabhu, if you can add something, you are most welcome to add. Thank you very much, and please honor Prasadam and Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna,